कोई भी एक्सेल फाइल से अगर आपको डेटा लेना है, वो जावास्क्रिप्ट से करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो अब मैं रिएक्ट के फ़ोल्डर्स खोल लेता हूँ, इसमें मेरे सारे प्रोजेक्ट हैं। मैं एक और फ़ोल्डर बना देता हूँ नए प्रोजेक्ट के लिए और इस फ़ोल्डर का नाम देता हूँ CSV जावास्क्रिप्ट। इस फ़ोल्डर का नाम देता हूँ CSV इन जावा स्क्रिप्ट। ओके, अब इसको मैं खोल लेता हूँ VS कोड में। क्या है कि ये डॉम से हो जाएगा, बट एक्चुअली ये डॉम से पॉसिबल नहीं है। हमें ये चीज़ के लिए बैकएंड का यूज़ करना ही पड़ेगा। यूज़ कर रहे हैं कि FS हो गया या फिर CSV रीडर हो गया, पार्सर हो गया, तो ये सब के लिए आपको पूरा बैकएंड लिखना ही पड़ेगा। तो मैं बस चलिए, जावास्क्रिप्ट के सारे प्रॉपर्टीज़ आप JSX में यूज़ नहीं कर सकते। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ जो बैकएंड के लिए होता है, जैसे FS या फिर जावास्क्रिप्ट के लिए अगर आप किलिए किलिए